Good afternoon, online offline students. So we are resuming the case study and कोई आया नहीं है क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो that we can map with this case study. Today we are going to do a case study on underpopulation. Case study of underpopulation in Australia. The question is analyze the policy measures that government can adapt to address the challenge of underpopulation. Analyze the policy measures that government can adapt to address the challenges of underpopulation. ठीक है, 15 मार्क्स का है ये. ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, लिखा भी नहीं इसमें मैंने, वो पता नहीं मिस हो गया लिखने में. ठीक है, repeating, analyze the policy measures that government can adapt to address the challenges of underpopulation. ठीक है, तो the theme is underpopulation in Australia. तो एक मैप बना लेंगे आप. We have Brisbane here, Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, and we have a great dividing range. Okay, this is a great dividing range, one of the four mountains of called as GDR. ठीक है, GDR, Great Dividing Range, and few of the locations I have located here. In fact, maximum population of Australia is living in the coastal areas, और ज्यादा बस यहीं पे ही है, ये वाला बेल्ट है जो 90% population is here. %90 of the population जो है that is living in this area, a belt, coastal belt on the eastern side of Australia. बना लो उसको. चले बनाया. ठीक है,
तो ऑस्ट्रेलिया is having a underpopulation. In terms of fertility, total fertility rate of Australia is 1.7 and the population is 300 crore plus. 300 बोल रहा हूँ, 3 crore plus, कुछ 3.2 कुछ समथिंग, ठीक है. TFR rate is 1.7. Overall density is 3.3 persons per square kilometer. And the maximum density will be observed in Sydney. Sydney में कहीं जाके है 50 persons per square kilometer, and that is way far from the cities that we have. ठीक है, Sydney 50 persons per square kilometer. So what is the reason? First we will figure out what is the reason or what are the reasons why the Australia is underpopulated. क्यों है? First is they do not have any civilization that have been in the practice since ages. कोई civilization है ही नहीं. Recently settled country. ठीक है, 1900s में ही जब English people came here, then they realized that there is a country which could be used, or there is a piece of land that can be used for settlements. ठीक है. Second is less arable land, as majority of or the major part of Australia is a desert. Major part of Australia is a desert, or I can say the conditions are harsh and hostile conditions, और terrain तो नहीं है, hostile conditions है. ठीक है. Leeward side of Great Dividing Range. Leeward side of Great Dividing Range means there will be, obviously leeward side है तो less rainfall and the drought vulnerability is more. ठीक है. Leeward side of GDR maximum area है and the drought vulnerability is also high. Plus Australia has a very strict immigration policy, और उसको white policy बोलते हैं, strict white immigration policy till 1970s. Till 1970s they have a very strict rules कि nobody is allowed to have a permanent residence in Australia unless and until he or she has a spouse in Australia. ठीक है, जब तक किसी ऑस्ट्रेलियन से शादी नहीं करेंगे तो nobody can stay here for permanent residence. So this was a very strict policy. No one can have PR without marrying Australian. ठीक है. Another is bushfires. Bushfires in West Australia is very common. West Australia is common and recurring also. This has become a regular ritual or annual ritual. हर साल ही there is a bushfire that is taking place and that is also responsible for many of the extinction of species. काफी मर रही हैं वहां पे प्रजातियां and all. ठीक है, तो these are few reasons. Now what are its results or repercussions? First is that Australia will be short of 2.3 million workers by 2050. ठीक है, this is a data from the Australian website ही बोल रही है.
गवर्नमेंट की. अनदर इज एजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट. इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट लिख लिया होगा उधर. तो एजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट. इसके अलावा देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ इज डिक्लाइनिंग. इफ द पॉपुलेशन इज लेस, ऑब्वियसली द मिलिट्री स्ट्रेंथ विल बी डिक्लाइन. ठीक है. प्लस पॉपुलेशन जो है, जो कल्चर है वहां का, दैट इज मोर मेटलिस्टिक. people refrain from marrying. ठीक है, because they think that it will turn out to be the loss of their freedom also. क्या ये आज मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा है? बुश फायर्स इन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इज कॉमन एंड रिकरिंग. हर साल हो रहा है, रिकरिंग. ठीक है. एजिंग पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग and that is also increasing the healthcare cost. Military strength is also declining. Plus there is a loss of specialization of labors. There is a loss of specialization of labors. कैसे है स्पेशलाइजेशन खत्म कर? ये aging population increase and there will be increase in healthcare cost. मिलिट्री स्ट्रेंथ विल बी डिक्लाइनिंग, लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर. कैसे स्पेशलाइजेशन का इरोजन कैसे होगा बताओ? जब बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, बहुत वर्क फोर्स इज अबंडेंट, तब हम देखते हैं कि बेस्ट स्पेशलाइज्ड आदमी कौन है. मींस यहां पे कुछ लोग खड़े हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल आर देयर, देन वी विल पिक वन अमंग देम एंड हु इज द बेस्ट इन दैट. और बेस्ट कौन होगा? वन हु इज स्पेशलाइज्ड, one who has their specialization in that particular area. बट जब वर्कफोर्स ही नहीं है, तो एक बंदा बोल रहा है कि मैं प्लम्बर भी हूं, मैं पंखा भी ठीक कर देता हूं, मैं एसी भी ठीक कर देता हूं, तो भाई कोई तो मिल जाए, करा तो लो काम. वो वाली बात है. लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इज देयर. लेबर ही नहीं मिल रहा है, तो दैट इज लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन. ठीक है. तो लेस वर्कफोर्स मीन्स द लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन. So some initiatives that they have taken, first is for birth of first child they are incentivizing the parents with $2,000, and on the birth of second child they are incentivizing them with $1,650. Now they are offering PR means permanent residency, PR status to many of the overseas citizens of Asia as well as Africa. Those who have some special skills, those who are willing to work in remote areas, they are offering them PR status. PR means permanent residence status. ठीक है. Scholarship schemes are also being given. Scholarship offers are also given to overseas students. ठीक है. स्कॉलरशिप दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, PR status and all. They are trying to maintain a work balance. Trying to maintain work-life balance. Because lot of people there complain कि वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है, तो अब क्या शादी करें बोल के. ठीक है. तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव बिकम इन फैक्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज इंट्रोड्यूस्ड राइट टू डिस्कनेक्ट. रिसेंटली न्यूज में था ये, पिछले साल. क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट? हाँ, once the working hours are over, you have all right to disconnect with office, your boss. कोई भी कोई एक्शन नहीं ले सकता आपके ऊपर. ठीक है. फोन स्विच ऑफ करो, मत उठाओ, ब्लॉक कर दो उसको. तो they are trying to maintain it by having a good work life balance. Or another is they also have a slogan that have been in news earlier, that we must have a 3 children, one for
father, one for mother, and one for nation. ठीक है, तो यही है, दो तीन चीजें लिखनी है जो उसमें, एंड यू ऑल नो, वो सब कर चुके हैं, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रेसिज्म है, ठीक है, दैट इज दैट कम्स इन द रिपरकशंस। क्या बोल रहे हैं? टुवालू से, हाँ, वो इनिशिएटिव आ जाएगा। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, वो इनिशिएटिव नहीं है, वो तो वैसे इनिशिएटिव भी लिख सकते हैं, मतलब मेजर तो लिया ही है, ठीक है, लिख सकते हैं। टुवालू पीपल हैव बीन गिवन रेफ्यूज, फाइन, यस, दैट्स इट, द केस स्टडी इज ओवर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, दो चार